दोस्तों आप ये वीडियो देखने के बाद प्लैनेट मार्स के उन 5 कूल डेस्टिनेशंस के बारे में जान पाएंगे जिन्हें आप जब मार्स पे जाएंगे तो ये आपके बहुत काम आएंगी। क्योंकि मार्स पे जाके आप करेंगे क्या? ऑब्वियसली मार्स को एक्सप्लोर करेंगे, बट कहाँ एक्सप्लोर करोगे? क्या आपको मार्स पे उन जगहों के बारे में पता है दैट आर वर्थ विजिटिंग वंस यू लैंड देयर ऑन द मार्स? जैसे इमेजिन करो कि आप एक एलियन हो और अर्थ के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मतलब सोच लो कि मैं एक एलियन हूँ और मैं अर्थ को जानता ही नहीं हूँ। अपने दिमाग से अर्थ नाम की चीज ही निकाल दो। यू डोंट नो व्हाट अर्थ इज। और फिर ऐसी सिचुएशन में इमेजिन करो कि एकदम से आपको एक दिन अर्थ पे लाके छोड़ दिया जाए और कह दिया जाए कि लो भाई कर लो एक्सप्लोर जो करना है। तो पता तो होना चाहिए ना कि एक्सप्लोर करना कहाँ है, मतलब क्या क्या चीजें हैं इस प्लैनेट अर्थ पे दैट आर वर्थ विजिटिंग। मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि अर्थ पे माउंट एवरेस्ट देखने लायक है, यूएस के एरिजोना स्टेट में ग्रैंड कैनियन देखने लायक है और डीप ओशंस में मरियाना ट्रेंच देखने लायक है। मतलब जब कोई आपको बताएगा कि भाई अर्थ पे ये जगहें देखने लायक है तभी तो आपको पता चलेगा ना। तो दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो में आपको प्लैनेट मार्स के उन 5 सबसे एक्साइटिंग घूमने लायक जगहों के बारे में पता पड़ेगा, जिसे आप फ्यूचर में जब स्पेसएक्स के स्टारशिप में बैठ के मार्स घूमने जाएंगे तो आपके पास पहले से अपनी एक ट्रैवल बकेट लिस्ट होगी और आपको पता होगा कि भाई मुझे मार्स पे क्या क्या चीजें घूमनी है। और आप अपने साथ आए दूसरे टूरिस्ट को भी इंप्रेस कर सकते हैं ये बताकर कि भाई मुझे तो पता है कहाँ कहाँ घूमना है मार्स पे, तुम्हें तो पता भी नहीं है। फॉलो मी। तो हमारी सबसे पहली डेस्टिनेशन दोस्तों मार्स पे है ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स इज द मोस्ट एक्सट्रीम वोल्केनो इन द एंटायर सोलर सिस्टम दैट इज फाउंड ऑन प्लैनेट मार्स। इट इज लोकेटेड इन द थार्सस वोल्केनिक रीजन एंड इट इज अबाउट एट द सेम साइज एज द स्टेट ऑफ गुजरात। Its height of 25 kilometers makes it nearly 3 times the height of Earth's Mount Everest, which is about 8.9 kilometers high. Olympus Mons is a gigantic shield volcano, those. It was formed after lava slowly crawled down its slopes. This means that the mountain is probably easy for future explorers to climb, as its average slope is only 5%. And at its summit is a spectacular depression of almost 85 kilometers wide, and it was formed by magma chambers that lost lava most likely during an eruption and collapsed. Our number 2 destination is dosto Tarsus Volcanoes. So while you are climbing around Olympus Mons, it is worth sticking around to look at some of the other volcanoes in the Tarsus region. Tarsus hosts 12 gigantic volcanoes in a zone which is roughly 4,000 kilometers wide. Matlab just imagine the scale. In a span of 4,000 kilometers, they are just big volcanoes. And these volcanoes are much larger than the volcanoes that are found on Earth because of the weaker gravitational pull that Mars has that allows the volcanoes to grow taller. And estimatedly, these volcanoes may have erupted for almost 2 billion years. Or in other words, almost half the life of Mars. The picture that you are seeing here shows the eastern Tarsus region as imaged by Viking 1 in 1980. At left from top to bottom you can see 3 shielded volcanoes that are roughly 25 kilometers wide each. And at the upper right is another shielded volcano called Tarsus Tholus. मतलब नाम बड़े मस्त हैं ना? And we have reached our 3rd destination, that is Valis Marineris. An interesting thing to note is that Mars not only hosts the most largest volcanoes in the entire solar system, but it also hosts the largest canyon in the entire solar system. And this canyon, Valis Marineris, is almost 3,000 kilometers long. That is almost 4 times the size of Grand Canyon, that is just 800 kilometers long. And now researchers aren't sure how Valis Marineris came to be, but there are several theories about its formation, and many scientists suggest that when the Tarsus region was formed, it contributed to the growth of Valis Marineris. Lava moving through the volcanic region pushed the crust upwards, which broke the crust into fractures in other regions. And over time, these fractures grew into Valis Marineris Canyon. Our 4th destination is Medus F. Wow, Italian name hai. Medus F. Oh, now this Italian Medus F is one of the most weirdest locations on Mars because some people speculate that it holds the evidence of some sort of UFO crash over there. The most likely explanation is it is a huge volcanic deposit, some 1/6 the size of our India, and over time the winds sculpted the rocks into beautiful formations. But researchers will need some more study to learn how these volcanoes were formed. A 2018 study suggested that the formation may have formed from immensely huge
huge volcanic eruptions taking place hundreds of times over a period of almost 500 million years. And these eruptions would have warmed the red planet's climate as greenhouse gases from the volcanoes drifted into the atmosphere. The last but not the least, number 5th destination is the famous North and South Pole of Mars. Now, Mars has two icy regions at its poles with slightly different compositions. The North Pole was studied up close by the Phoenix lander in 2008, while our South Pole observations come from orbiters. And during the winter, temperatures near both the North and the South Poles are so frigid that carbon dioxide condenses out of the atmosphere into ice on the surface of Mars. But this process reverses in summer, where carbon dioxide goes back into the atmosphere. The carbon dioxide completely disappears in the northern hemisphere then, leaving behind a water ice cap. But some of the carbon dioxide ice remains in the southern atmosphere. All of this ice movement has vast effects on the Martian climate, producing winds and other effects that we have been known of. And those were our 5 destinations. अब दोस्तों, अगर आप ये चीज जानने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो कि इलॉन मस्क का एक्चुअल रियल प्लान है क्या, लाइक व्हाट इज प्लान टू कोलोनाइज मार्स, तो ये रही वो वीडियो। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो देख के मजा आया हो या फिर इससे कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्यूरियस निहाल, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।